covered the matter of Kashmir. So we have also covered the matters related to internal security in areas like cyber security. We also discussed so many matters of on terrorism. We discussed about Naxalism. So this will be my second last lecture on internal security issue. Okay, next lecture I will sum up with telling you what is the Khalistan movement and all about. Okay, so today we are discussing the issues in Northeast India. uh, we have 7 states in Northeast India. So Assam is the state which is having borders with all 6 Northeast Indian states. So Assam, we have Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura. So 5, Arunachal Pradesh. Okay, and the last is Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam, and last one Nagaland. Okay, so all 6 states have borders with Assam. So all Assam is one of the parts of Northeast India. So we generally refer that particular part as Sikkim and Northeast India. Now remember, Sikkim does not come in Northeast India. Okay. However, when it comes to thinking about that particular part, we have to take Sikkim into consideration. Northeast India, as far as geography is concerned, starts from the area of Darjeeling. So when we are discussing about this issue, we are not just discussing from internal security point of view. We will take some part of foreign policy into consideration. We will take the international relations and Northeast India into consideration. We will have to take the transportation, communication, then governance, geography, everything into consideration. Okay. Now what happens is that generally geography is called as mother science, because geography might be helping you a lot. It might be blissful to you the way we have geography of Maharashtra, or else if your country is a landlocked country, say you are Afghanistan, or else within India if you are a landlocked country like Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh. Okay, so there are some natural impediments for your own survival and growth. Okay, so when you have now just imagine now in India, generally the South Indian states have a bigger amount of GDP. South Indian states have greater amount of this urbanization. Even as far as women children ratio is concerned, working women is concerned, so South Indian women have a far better living standard as compared to the North Indian women. But apart from that, one thing also true that there are definite law and order troubles in South India, but they are not reported well. But when it comes to Maharashtra, one of the most aggressed, or one of the most advanced states in India. So Maharashtra is generally called as the engine of Indian growth. Okay, so the very helpful geography, that is the different type of, or very special kind of coastal area that we have got. Okay, now for example, Bombay. The origin of Bombay was Bounbay. Bombay. Bon means good. We used to call Bon wage when someone is going for traveling. We call like that. So Bombay. Bay means the coast. Okay, so that was the name, geographical name of this city. So by that way, you can understand within the name only there is a complement for the city. So the city was worth being complemented because of the geography, and you can see Western India, to be very precise, Goa, Maharashtra, Gujarat, those are blessed also. I mean, people are very hardworking, no doubt about that. But Southern India, Western India, you can see stories different because the coastal area makes a lot of difference. In previous lectures, we have also seen that there was industrial revolution, especially in Britain, because of the blissful geography. So वैसे ही देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हम जब बात करते हैं ना, तो कुदरत ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जो किया है, कुदरत ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो दिया है, ओके, that is something really very different and difficult also. Okay, area is beautiful, no doubt about that. But that beautiful area, those hills, those valleys, those beautiful trees, huge, large amount of trees, okay, and that those Himalayan ranges. I mean, that area is extremely good for travel and tourism, right? As far as climate is also concerned, climate is concerned, area is good. But फिर भी there are some problems with the area because as far as growth is concerned, it is definitely hampered because of the geography. So जब अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के
के बारे में हम पहले बात करते करते हम लोग पहले देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप, and then we'll see the physical or the physiography of northeast India. So just give me a minute, I'll just show you the map. Okay. Okay, now I'm just sharing the screen before you. Okay, is Southeast India, is Northeast India visible to you? Is it visible? Yeah, okay. See, this is Northeast India. Okay, and now why? Now, I'll show you Northeast India ka map, and then I'll also show you the Southeast Asia map, because the politics of Southeast Asia directly affects the Northeast India. Okay, and so Northeast India basically comes as a part of Southeast Asia. So in the meanwhile, I'll also keep on telling you what is the importance of foreign policy with reference to the development of northeastern states. Now, देखो, we have this Northeast India, Sikkim plus Northeast. So generally it is taken into consideration as Sikkim and Northeast. Okay. Now, Sikkim. Now, what happens is that you see the light gray state, that is the state of West Bengal. Okay, state of West Bengal. So what happens? There is Kolkata in the state of West Bengal. You come to the middle part of West Bengal. There is Kolkata. Okay, and from Kolkata, if you want to go to Darjeeling, okay, below Gangtok there is Darjeeling. Okay, so Kolkata to Darjeeling. Then if you start going towards Assam, you start finding the areas like Kuch Bihar, okay, New Jalpaiguri and Kuch Bihar. Now what happens is that we have to enter we have to enter this part via Darjeeling. If you are going by road, if you're going by train, you have to enter via Darjeeling. Darjeeling comes in West Bengal. Now, when your train is taking you to West Bengal, you get down at Howrah station. You get down at Howrah station, and there is no railway station of Kolkata.
There is Howrah railway station. Okay, क्योंकि जैसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओके, या फिर पहले बोरी बंदर कहा जाता था, ओके, वैसे उसको, that is Mumbai, okay, or is Bombay Central also you have, but here we have one railway station called Howrah. So from Mumbai via Nasik you can go to Howrah. Okay, you get down at Howrah, and just before the Howrah station you have a long Howrah bridge. Okay, you must have seen that Howrah bridge in movies. So once you cross Howrah bridge, there is a railway station called Sialda. Okay, so your India, that's Western India, Southern India, Eastern India, okay, Northern India, that takes you to Howrah, and then from Howrah you enter you go to Sialda, and from Sialda you actually begin with your northeast journey. From Sialda you can catch a train, and again a whole night journey you can go to New Jalpaiguri. Okay, गंगटोक के नीचे आपको दिखेगा the New Jalpaiguri Darjeeling area. Okay, so you generally, you when it comes to West Bengal, we know West Bengal is famous for what? West Bengal is famous not for Mamta Banerjee only, or not for communist states only, some communist parties only, but West Bengal is famous for the fishes in sweet water. But when it comes to Darjeeling, you start, looking around for the tea plantations, okay, run by various companies, people working in the tea plantation, etc. So how you get down at Sialda, you get down at New Jalpaiguri, or even that New Jalpaiguri is a railway station. So New Jalpaiguri is the area which takes you to Darjeeling. Now there starts your actual Northeast India. क्योंकि दार्जिलिंग के बारे में भी आज गोरखालैंड मूवमेंट चल रहा है. Now Darjeeling and Kolkata are 400 kilometers distant from each other. But what comes is that's the reason why Darjeeling is constantly asking for a separate statehood, because if Darjeeling is made as a separate state, they will be having their own separate high court. This is what they think. Or else even there are some proposals that Gangtok High Court is also able to administer Darjeeling. Anyway, Gangtok has a separate high court. Matter is different in Maharashtra, because although Nagpur is far away from Maharashtra, once we complete the Samruddhi Mumbai Nagpur highway, it will be possible for us to travel from Nagpur to Mumbai in 12 to 14 hours. But that is not the case with Darjeeling and New Jalpaiguri, or Darjeeling and Kolkata rather. Reason is that the area is very hilly, area is very unfriendly. Okay, so you take more than 24 hours to travel that particular area. So because of that, there is a constant tussle going on to demand the separate Gorkha land. Okay, so from this you enter Assam. So you know Assam. Okay, असम के पहले एंट्री मारते मारते आपको लगता है कुछ बिहार. ओके, सो सुंदरबंस जो एरिया हम लोग कहते हैं वो यहाँ से शुरू होता है. ओके, then this is the political map as I said. Okay, and then you have capital of Assam, that is Guwahati. Then you have capital of Meghalaya, that is Shillong. त्रिपुरा का है अगरतला, मिजोरम का इजवाल, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, and you have capital of Arunachal Pradesh, Itanagar. Okay, so forget about this capital. I mean, we can't even remember the names properly. Forget about the capital. So forget also about the chief ministers of these particular states. So हम लोग को ये problem पता ही नहीं रहता. Okay, now I'll show you the physical map of Northeast India. Okay, just a minute.
Okay, now, is this visible? Visible, Northeast India? Yeah, okay, thank you. Thank you so much. Fine. Now, see why this map is so important for us. I'll show you. Okay, now here we hardly see West Bengal. Okay, now now look at that. This is the typical Indian side of the map. Okay, now what happens is that you see Arunachal Pradesh, the area is very different. Then you see Assam. Assam is mostly, you can see, fertile land of Assam. You have very important land of Assam, and that land has, this is Brahmaputra river flowing. Okay, so Brahmaputra and Ganga come together and they go to Bangladesh. Okay, they merge together in Bangladesh. Okay, so this is Brahmaputra river that is coming through Assam. You see Arunachal Pradesh, you see Nagaland, you see Manipur. Okay, you see this Meghalaya, you see Mizoram. Now Tripura is a flat state. Tripura does not have any hills, so there is no touring value also for Tripura. But Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, उसके बाद फिर Assam. You see, Assam is mostly lush green. Okay, there are Mikir hills in Assam. Assam is mostly lush green, but then in Arunachal Pradesh you have this Dalfa hills, you have Miri Abhor hills, etc. Okay, then you also find Garo, Khasi, Jaintia hills in Meghalaya. Okay, now these are the parts of Himalayan mountain ranges. Even Nagaland is a part of Himalayan mountain range. So Himalaya, that comes from the Pakistan occupied Kashmir, it comes to the Northeast India. So these are basically Himalayan ranges of state. कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि even Andaman Nicobar Islands are the extension of Himalayan mountain ranges. Okay, so geographically you can understand the area which is shown in the dark manner. It is completely hilly, it's completely unfriendly as far as geography is concerned. Because of that, there are huge amount of impediments for the growth and prosperity of the Northeast India. Then you also see there is a lot of trouble also for the information and technology. Okay, so this is a political map, this is a physical map of Northeast India. Now what happened, let's come to Southeast Asia. Now the Southeast Asia, you have China in Southeast Asia. Then you have the northeastern part of India in Southeast Asia. You have Myanmar, you have Thailand. Okay, you have Malaysia, Borneo. There is a continuity between Southeast Asia and the Northeast India. So because of that, people say that the entire affinity of Southeast Asia, sorry, Northeast India is towards the Southeast Asia. There are some speculations that Northeast Indian people did not want to become the part of Indian Republic, but they still have been made. Or else there are also references where the people of Southeast Asia, Northeast Indians, the people of Northeast Indians were willing to become part of India because the Indian freedom movement was there also in Assam and areas like Nagaland and Arunachal Pradesh. But point is that the area in Arunachal Pradesh or the population in Arunachal Pradesh is very, you can say, without any density. Okay, there is no dense population. Arunachal Pradesh perhaps holds the minimum population per square kilometer. Okay, minimum density of population per square kilometer. Density is nothing but crowd. Hmm. तो एक वो पार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जब बात करते हैं वैसे। तो अभी देखा जाए ठीक से तो एक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक उत्तर प्रदेश, the population of Uttar Pradesh as far as 2011 census is concerned is 20 crore. So they have 80 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh. Maharashtra का population उत्तर प्रदेश का 60% है, that is 12 crore, and Maharashtra has 48, means 80 का 60%, that is 48 Lok Sabha seats. Okay, similarly Gujarat has 26. Okay, the Bihar has 40 Lok Sabha seats. West Bengal has huge amount of Lok Sabha seats. But despite having big area and 7 states altogether, Northeast India, including Assam, has only 25 Lok Sabha seats. So you can understand
huge area of northeast India, yet it is very small as far as population is concerned. It's 60% of Bihar's population. It is 20. It is what I mean. You can say less than half of Maharashtra's population. Okay, so despite having 7 to 8 states, and literally some states have 1 or 2 seats also of Lok Sabha. So why am I saying this? Because bigger is the representation, larger are the benefits. This is what is said about the states. Okay, so because of that, you can always find Uttar Pradesh is the one state which generally decides the government, the prime minister of India. So excluding this gentleman, Dr. Manmohan Singh, we have seen many prime ministers coming from Uttar Pradesh. We have seen uh, no, Lal Bahadur Shastri, we have seen Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, we have seen Vajpayee coming from Uttar Pradesh. This VP Singh coming from Uttar Pradesh. We have seen even Narendra Modi contesting elections from Uttar Pradesh, despite he's a Gujarati. So that's the power of a state. When the population is huge, when the geography is friendly, the state naturally prospers. That's the power of a state. Same power financially is held by the state called Maharashtra. But that is not a case, that is not a fate of the Northeast India. So होता ऐसा है कि Northeast India के बारे में थोड़ा ये कहा जाता है. Okay, apart from that, now if you see the political map of this Northeast India, okay, geographical map तो आपने देख लिया, हिली एरिया कितना है देखा आपने, लश ग्रीन एरिया कितना देखा, you have seen rivers flowing through Northeast India. Okay, now we have one more problem with Northeast, and that is the diversity of the people. Now, for example, we have this Sikkim. Now, as far as Sikkim is concerned, the population of Sikkim is very small. Okay, mm, Sikkim is second smallest in terms of population. Smallest is Goa. Sikkim is even third smallest in terms of population density. Means it's not that just population is small. The population smaller as far as the state is also concerned. So density में सबसे अगर छोटा अगर अरुणाचल प्रदेश रहेगा, तो उसके ऊपर सेकेंड लास्ट नंबर मिजोरम का लगता है, उसके ऊपर नंबर लगता है सिक्किम का, और पॉपुलेशन में सेकेंड लास्ट नंबर लगता है सिक्किम का, लास्ट नंबर लगता है गोवा का. ओके, सॉरी, आई मीन सॉरी, सिक्किम का ही लास्ट नंबर है. ओके, 7.5 लाख का कुछ तो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अनुसार सिक्किम का. 7.5 लाख के सिक्किम के पॉपुलेशन में भी सिक्किम में 7 लैंग्वेजेस बोली जाती है. 7 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन सिक्किम alone with 7.5 lakh population. Then comes area like Arunachal Pradesh, Assam. The areas are really, really very difficult for management also because of the huge amount of diversity. So as far as Sikkim, then Gorkhaland and Northeast India is concerned, Sikkim, the Darjeeling part, and Northeast India is concerned, this part holds the diversity of round about 3,000 spoken languages. 3,000 spoken languages. So 3,000 are basically the dialects. These are not languages. Dialects do not have their own script, and dialects do not have their own different grammatical rules also. Okay, मराठी मध्ये मालवणी भाषा आहे, मराठी मध्ये वराडी भाषा आहे, त्याच्यानंतर मराठीमध्ये अहिराणी भाषा आहे. These are the dialects of Marathi language. Okay, they do not have separate grammatical rules. They do not have separate script also. Script नहीं रहेगी जो चलेगा. You need to have separate grammatical rules. Okay, that's called the dialect of the language in current context. So वैसे ऐसे dialects हैं, but because of that there is a because of the diversity, because unity in diversity कहने के लिए बहुत अच्छा रहता है. Our diversity is our beauty बताने के लिए बहुत अच्छा रहता है. But when it comes to the administration part, it's very difficult to administer the area which is completely this diverse. Now comes now just take the example of Nagaland. नागालैंड का खुद का लैंग्वेज कौन सा है? नागा इज अ कल्चर, but Nagaland speaks mostly in English language.
It's painful, but yes, one state in India speaks mostly in English language. Now let's come to Assam. Assam में क्या है? तो असम का लैंग्वेज है अहोम. ओके, असम स्पीक्स इन असमिया लैंग्वेज. उनका मेन कल्चर है वो उसको उसे कहते हैं अहोम लैंग्वेज, अहोम कल्चर. ओके, अहोम वर द किंग्स हु वर अहोम. Yes, Ahom comes the official language. Ahom. No, Ahom were the kings. No, ऐसा होता है कि और and Ahom were the staunch Hindu kings. Even in our Indian history, even medieval Indian history, modern Indian history, we hardly learn about these states. Okay, तो अहोम लैंग्वेज के बारे में, मतलब अहोम लैंग्वेज में, अहोम कल्चर में एक उनका एक खुद राजा था असम का. उसका नाम था लचित बड़फुकन करके उसका नाम था, लचित बड़फुकन. द नेम इज आल्सो वेरी स्पेशल. पर असमिया लोग कहते हैं कि ही वाज द ग्रेटेस्ट, ही वाज द परहैप्स द ब्रेवेस्ट किंग इन ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज उनका ये कहना है कि औरंगजेब ने पूरा इंडिया जीता और औरंगजेब की मौत हुई महाराष्ट्र में. So Aurangzeb did win entire India. Aurangzeb entered Maharashtra, stayed there for 27 years. Okay, but point is that Aurangzeb could not even enter Assam. So we did not allow Aurangzeb to enter Assam. Okay, that's what people say. I mean, it's not that they don't respect Shivaji Maharaja Mahana Pratap, but कहते कि we did not even allow Aurangzeb to enter India. The Aurangzeb, the great Aurangzeb who had won Afghanistan. So Aurangzeb was the last king to win Afghanistan handsomely. Such Aurangzeb did not even enter Northeast India. That's the swag of the Northeast Indian people have, the Assamia people have. I'm purposely saying Assamia people, I'm purposely Ahom language because Assamese is not a culture. They are not Chinese or Japanese or they are not Italians. Okay. We have language of Assam, Ahom language, Ahom culture. They're staunch about their own language. Okay. पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि इनके पास बहुत बड़े लेवल पे एक प्रकार का माइग्रेशन शुरू हुआ. दिस माइग्रेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बांग्लादेश. सो वाया बांग्लादेश दे स्टार्टेड कमिंग टू असम. अब बांग्लादेश का माइग्रेशन कैसे शुरू हुआ, इसका भी एक, इसकी स्टोरी भी एक रंजक स्टोरी है. रीजन इज दैट I must have told you that when I was discussing about India and Bangladesh issue. When India and Bangladesh were divided, or India and Pakistan were divided, okay, East India, East Pakistan, West Pakistan, India. At that time, as I just told you, कि जनवरी में डिसाइड हुआ कि सेपरेट पाकिस्तान इज राउंड द कॉर्नर, सेपरेट पाकिस्तान. बिकॉज इन जनवरी देयर वाज अ फर्म negative reply in Germany. There was a firm negative reply from the Muslim League for joining the Indian Constituent Assembly. So जब Muslim League ने finally no कह दिया Indian Constituent Assembly join करने के लिए, then they decided that, then it was decided that the Muslims are going to have a separate nation and there shall be separate Constituent Assembly for them. तो ये डिसाइड हुआ. तब तक जनवरी तक डिसाइड ही नहीं हुआ था कि बॉर्डर कैसा बनाना है. नाउ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, पंजाब जहाँ है, राजस्थान जहाँ, ये हिली एरिया नहीं है ज्यादा. ये ज्यादा मतलब वहां बॉर्डर एरिया ज्यादा हिली नहीं है. गुजरात का तो एरिया बिल्कुल हिली नहीं, वो तो पूरा कच्चा का मैदान है. सो कश्मीर हैज सम ट्रबल बिकॉज कश्मीर हैज द हिमालयन माउंटेन रेंजेस. बट व्हेन इट कम्स टू ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया, द एरिया वाज हिली, area was marshy. In Assam area was marshy. In Tripura also the area was marshy. तो अगर दोनों देशों को अलग करना है तो कैसे करें, that was a question. उसके बाद फिर वहाँ जब जब बंटवारा कंफर्म हुआ तब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट was coming back, coming closer. Actually 3 जुलाई was supposed to be the Indian Independence Day. 3 जुलाई 48, पर हमने उसे प्रीपोन करके 15 अगस्त कर दिया था. Now Radcliffe was the man who was who was deciding the border between two nations. Okay, Radcliffe.
Radcliffe Commission. But then this man actually sat on table and depicted the map of two nations by hand, and then he decided that this is going to be the final borderline between two nations, India and Pakistan. अभी जब ये बॉर्डर बना तब तक एक तो पब्लिक को ये पता नहीं था, जो बॉर्डर के आसपास रहते थे उनको ये नहीं पता था वेदर दे आर इन इंडिया और दे आर इन पाकिस्तान, तो वो भी किसी को पता नहीं चला. उसके बाद फिर बॉर्डर तो बन गई, पर उसको फॉलो कैसे करें, बिकॉज इफ यू सी द एरिया ऑफ द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया. ओके, अभी एक बात बताऊं मैं आपको, तो सीधा सीधा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, दैट इज द ग्रेट लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद एनी कंट्री. इट्स बांग्लादेश. ओके, देन कम्स चाइना. बहुत लोगों को इंडिया चाइना लगता है, बट बांग्लादेश एंड इंडिया. ओके, सो ईस्ट पाकिस्तान जो था, तो मैंने जैसे जैसे बताया आपको कि पूरा का पूरा ये डेल्टा था. बांग्लादेश इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. सो दो नदियां हैं. एक नदी तो पूरी वेस्ट बंगाल से होके बह रही है, बांग्लादेश में जा रही है. दूसरी नदी बांग्लादेश में आ रही है, ब्रह्मपुत्र इंडिया से आ रही है. एंड दोनों नदियां फिर एक दूसरे को मिलती हैं और उसके बाद दे मर्ज इन द बे ऑफ बंगाल. ओके, सो एक बर्डफुट या फिर एस्चुराइन डेल्टा जो होता है, वो एस्चुराइन जो होता है वो बन जाता है. ओके, सो there are huge amount of marshy lands around the border. Okay, so अगर बॉर्डर बनाना है तो फिर कैसे बनाए, दैट वाज अ क्वेश्चन अगेन, because of the marshal lands first of all, and secondly, since the border was made by hand, it was a completely inconvenient border. मतलब अगर बॉर्डर पे आप रहते हो एंड अगर आप लकीली अगर आप इंडिया में हो, ओके, या फिर कहीं भी हो, मतलब यू डोंट हैव टू बी सेंट अवे फ्रॉम एनी पार्ट. ओके, यहाँ वहां से खदेड़ दिया आपको, ऐसा नहीं होगा. अब लकीली उस एरिया में रहते हो, ओके, इंडिया में रहते हो या फिर बांग्लादेश में रहते हो, फिर भी प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपका गांव जो है वो इंडिया में है, गांव की पंचायत ईस्ट पाकिस्तान में है. आपका गांव इंडिया में है और गांव का जो कुआं है वो ईस्ट पाकिस्तान में है. आपका डिस्ट्रिक्ट गांव जो है वो एक इंडिया में है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में है. ओके, एक ही गांव के बीचों बीच से दोनों देशों की बॉर्डर जा रही है. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ वाज अ मैनमेड लाइन ऑफ कंट्रोल. ओके, मैनमेड बॉर्डर लाइन रादर. उसके बाद अगर आप एक ही गांव के बीच में से लाइन जा रही है, गांव का बाजार एक जगह, एक देश में, गांव एक देश में, एक घर के बीच में से लाइन जा रही है, मतलब एक ही घर के दो हिस्से, एक इस देश में और दूसरा उस देश में. ओके, so it was a very interesting story but a very inconvenient story of partitions. तो उसकी वजह से जो बॉर्डरिंग जो था, फेंसिंग जो होना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के बीच में, वो फेंसिंग कभी ठीक से हुआ ही नहीं. मतलब फेंसिंग की बातें निकली 2006-7 से निकली और फाइनली 2015 में दोनों देशों के बॉर्डर्स कंफर्म हो गए. ओके, सो दैट वाज अ केस. Now, because of this, the borders were porous. Because of this, the borders were porous. Okay, कोई भी आ जा सकता था उन बॉर्डर्स में, और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो चुका था. प्रॉब्लम ये हो चुका था कि इन्फिल्ट्रेशन वाज रियली वेरी इजी विद दीज बॉर्डर्स वर ऑन. ओके, देखने को तो बॉर्डर दिखती थी वो, पर कुछ नहीं मतलब दिखता. वो पब्लिक आराम से आता जाता रहता है, जैसे थाना से कलवा जा रहा है, थाना से मुलुंड जा रहा है, वैसा पब्लिक आता जाता रहता था. ओके, पुलिस का पैरा होगा तो भी प्रॉब्लम होता था. ओके, ना उसके बाद उसकी वजह से असम में बहुत, मेघालय में भी, ओके, बहुत बड़े लेवल पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ. इवन वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन हुआ. बट एज फार एज सेटलमेंट एरिया इज कंसर्न, मेघालय जो मैंने बताया आपको, मेघालय जो था, ये मेघालय, एक्सक्यूज मी, मेघालय जो था, मेघालय हिली एरिया था, पर असम सेटलमेंट के लिए इजी था. ओके,
even if you see the Bangladesh part of India, it was easy for settlement. Oh sorry, Bengal part of India, ये सेटलमेंट के लिए एकदम इजी था. ओके उसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे असम और वेस्ट बंगाल में आके बांग्लादेशी लोग बैठ गए. ओके अभी उनको निकालना बहुत मुश्किल था. एंड वी हैव over the period of time we have discussed the political matters also in sending I mean in pushing them to their own nations. And there are some issues related to foreign policy also. So as far as this is concerned, Meghalaya and Assam is concerned. Okay, Assam was an affected state, Bangladesh was an affected, West Bengal was an affected state. तो एक अनरेस्ट आने लगा. और एक कहा जाता है एक बात कि असम में अहोम लैंग्वेज जो है ना, that Ahom language was also becoming it was shrinking. मीन्स असम में एक जमाना ऐसा था कि असम में अहोम लैंग्वेज बाद में बात करने में लोगों की मेजोरिटी थी. अचानक एक बात सबको पता चली कि असम में अहोम लैंग्वेज जो उनकी खुद की है that is 30%. Okay, 31%. So Assam stands as the state as a state in India where the local language or the state language is a minority language today. अब ये हुआ कैसे? तो 1969 से ये इन्फिल्ट्रेशन एक्चुअली चल रहा था. और 1969 से ऐसा भी कहा जाता है कि असम में बोडोलैंड और उल्फा मूवमेंट तो थे ही, तो उनको कहीं ना कहीं मात देने के लिए असम की एक डेमोग्राफी बदलने का एक प्रयास किया गया. मतलब अगर उल्फा और बोडोलैंड मूवमेंट्स हैं तो वो दे आर बेसिकली फॉर व्हाट, वो बेसिकली असम के सेपरेट स्टेटहुड या असम के सेपरेट नेशनहुड के लिए थे. पर अगर अपने को अगर दाना पानी बंद करना है या उनका अगर कंडीशन अगर खराब करना है या फिर इम्बैलेंस अगर उनको करना है, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ असम. ये भी एक कहीं ना कहीं एक सुझाव दिया गया था. ओके एंड देन ह्यूज अमाउंट ऑफ बिहारी स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम बिहार टू बंगाल, बंगाल टू असम. तो असम में वो हुआ. उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्टार्टेड एंटरिंग असम बाय डिफरेंट वेज. वो एक शुरू हुआ. देखो असम में असम की 2 बार बॉर्डर है. ओके बांग्लादेश को. सो दोनों जगह से बांग्लादेश में के लोग असम में आ सकते थे. ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज एन अनरेस्ट. नाउ असम की जो लैंग्वेज थी वो 30% थी. एंड कहीं ना कहीं ये कहा गया कि अगला मुख्यमंत्री जो है असम का, वो मुख्यमंत्री एक तो असम का होगा, एक तो बिहार का होगा या फिर बांग्लादेश का होगा. ओके दैट वाज अ स्लोगन गिवन बाय द यूनियंस. और उसके बाद फिर एक 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 डर पैदा हुआ था. और उस डर की जो परिणति थी, उस डर का रिफ्लेक्शन था. इट वाज कॉल्ड एज ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन दैट विल स्टडी फर्दर. ओके All Assam Students Union. That was the case. Okay. Now, one more. I mean, our political problems also came on surface. Now, whatever references I'm giving, those references are quoted by the people. I mean, quoted by some very important people in Rajya Sabha. Okay. So I can also show you the video clip if you want some references. पर ये हुआ था. और राज्यसभा में अगर आप कोई कायदा कोट कर रहे हो, क्या हुआ, कौन सी चीजें हुई, अगर आप कोट कर रहे हो, तो unless there is a notice censor motion or unless there is a breach of privilege motion against that particular speech, that speech is considered final and the proof is considered important. Okay, legal. So असम में 83 में एक ये कायदा आया. उसका नाम था IMDT एक्ट. नाउ इमेजिन IMA, Indian Illegal Migrants Act, was implemented all over India.
असम में कायदा आया, उसका नाम था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल, IMDT। और इस इंडियन IMDT एक्ट में जो प्रोविजंस थे, प्रावधान, वो इतने लाफिंग लेवल के थे। ओके, मतलब ये क्या है, मैंने आर यू रियली वांटिंग टू send the refugees away or send the illegal migrants away, or you are just kidding? Okay, मतलब सबसे पहला, if I mean over there, I mean all over India, if there is an illegal immigrant, okay, that illegal immigrant पे अगर किसी ने डाउट लिया कि भाई तू illegal immigrant है, it was that person accused responsibility, जो accused होता था कि accused of being illegal immigrant, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी प्रूव करने की that he is not, he is an Indian citizen, he is not an illegal immigrant. Okay, ये कहते कहा जाता था पहले कायदे के बारे में। illegal migrants determination by tribunal का मतलब था, if you are trying to say that someone is an illegal migrant, then it's you who has to prove that you are right. मतलब पहले अगर कोई एक्यूज होता है बीइंग इलीगल इमिग्रेंट, उसको प्रूव करना पड़ता था कि वो इनोसेंट है, वो इंडियन हिंदुस्तान का नागरिक है। अभी किसी को अगर एक्यूज किया तो एक्यूज बनाने वाले को, एक्यूज करने वाले को प्रूव करना पड़ेगा, एक्यूज को निर्दोष माना जाएगा। ओके, सो द ओनस was on the I mean onus was on the person who was claiming or charging the accused। हाँ, तो कंप्लेनेंट पे ओनस आने के बाद पहले कंप्लेनेंट को क्या करना है, कंप्लेनेंट हैज टू डिपॉजिट ₹25 lakhs। इमेजिन 83 में 1983 में ₹25 lakhs to the nearest police station first, then complainant has to stay in that particular area for last 9 months, and then complainant will have to know the person from last 3 years. So first of all, deposit ₹25 lakhs, make sure and prove that you are staying there for 9 years, and make sure and show that you know that concerned person for last 3 years। Okay, अब 25 लाख रुपीस का जो अमाउंट था वो ऊपर वाले की दया से 9 लाख तक लाया गया। Guys, you can understand the वोट बैंक पॉलिटिक्स behind this। Okay, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ही था। तो उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिला, पर बिकॉज ऑफ दैट इन नेक्स्ट 12-13 years 9 people were deported from India to Bangladesh। 9 people were deported from India to Bangladesh। So that's the story of how we have handled the issue of illegal immigrants। Now illegal immigrants में अगर illegal immigrants का इशू निकाले तो कांग्रेस को लगता था you are playing the Hindu Muslim cards, because mostly illegal immigrants were the Muslim। This is according to Congress। But when BJP started playing Hindu and Muslim cards and illegal immigrant cards, तब ये बात भी पता चली कि illegal immigrants हिंदू भी है। ओके, सो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही इमिग्रेंट्स है, सिर्फ मुस्लिम ही इमिग्रेंट्स, दोनों तरीके के लोग वहां आ रहे हैं जिनको इंडिया में सहारा चाहिए। Okay, fine, I'll go ahead। So we will have some presentation in next few minutes when 40 minutes are 40 minutes to go। Okay, so I'll have presentation before you। हाँ, तो पहले उसके पहले आपको ये मैटर बता दूं। Now I'll tell you, बहुत लोगों को ये लगता है कि the Pakistan sponsored terrorism in India started from 1991। This is a very gentle general acquisition, okay, of many people। I mean, those who want to ignore everything, let them ignore, but we cannot। There is a general accusation that the Pakistan sponsored terrorism in India, for example bomb blast, okay, in India started after the demolition of Babri Masjid। ये कहा जाता है, सरासर गलत है। उसका सही जवाब ये है कि the Pakistan sponsored terrorism in India started from 1956 itself। Okay, Pakistan sponsored terrorism was operated from East Pakistan। Okay, it's operated from East Pakistan, and it started from 56 itself। 23rd of March 1956 is the Republic Day of Pakistan। तभी से शुरू है ये।
ईस्ट पाकिस्तान से शुरू हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर था वो ढाका था और एपी सेंटर था वो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया था. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो उसकी वजह से इट वॉज कंपल्सरी फॉर अस टू गेट इन टू द ट्रबल ऑफ बांग्लादेश और द ईस्ट पाकिस्तान एंड ढाका. क्योंकि ढाका में जो प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुआ, ढाका में जो वहां की जो अवामी लीग थी, उस अवामी लीग को सरकार बनानी थी और उनके पास समर्थन भी था. और अवामी लीग के जो प्रेसिडेंट थे मुजीबुर रहमान, उनको बनना था पाकिस्तान का, पूरे ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर. तो उनको लगा कि इस्लामाबाद में बुला रहे तो शायद कोरोनेशन करने के लिए बुलाएंगे मुझे. कुछ नहीं, उनको पकड़ के अंदर डाल दिया. एंड दैट्स हाउ देयर वाज अ वाइड स्प्रेड एंगर ओवर द एंटायर ईस्ट पाकिस्तान. सो अगले 6-8 महीने में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पीपल एंटर्ड इंडिया बाय डिफरेंट एंगल्स. अब कैसे एंट्री मारा, बॉर्डर्स नहीं थे क्या, ये सब हमारी बात करती हो चुकी है. ओके, सो दोहराना नहीं चाहता मैं. दैट वाज अ फैक्ट. सो दैट्स हाउ द एरिया इज अफेक्टेड. So far we have discussed the border issue between India and Pakistan, East Pakistan or Bangladesh. We have discussed the border issue of Bangladesh and Northeast India. We have discussed the geography of Northeast India. एक geography के बारे में एक बहुत सही बात बताएं. ज्योग्राफी के बारे में एक सही बात बताना चाहता हूं मैं, मतलब सुन के मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ओके, अभी कैसे होता है देखो कि सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और फिर आप यहाँ से निकल रहे हो और जा रहे हो, से लोनावला जा रहे हो या पनवेल जा रहे हो. ओके, थाने से निकल के, या फिर मुंबई से आप अगर मे बी थाने में आ रहे हो. ओके, और अगर कितना वक्त लगेगा मुंबई से, मतलब कुर्ला से थाने आने के लिए एक बस अगर लिया नॉन स्टॉप आई तो 40 मिनट्स लगेंगे. ओके, नॉट एन इश्यू. एंड सपोज if you are going from Thane to Panvel, it will take 1 hour, not an issue. Okay, तो ऐसा है. now imagine कि you are traveling by a bus in North East India और आपका एक जगह आती है ऐसी है कि थोड़ा स्ट्रीम नदी का ऐसा जो बहाव है, थोड़ा स्ट्रीम नदी का दिख रहा है. इतना लीथल आपको नहीं लग रहा, तो बस वाला उतरता है, उसमें उतर के फिर वो नापता है कि उसकी गहराई कितनी है, और फिर गहराई नापने के बाद वो फिर या फिर क्लीनर उतरता है, उसकी गहराई नापता है और फिर बस वाले को कहता है कि भाई चल इसमें से नहीं निकल सकता है. बस का जो पहिया है वो ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर अंदर घुसेगा, पानी के अंदर जाएगा ज्यादा से ज्यादा. वो ना 1 मीटर फॉर अ बस इज फाइन, इवन हाफ मीटर फॉर अ बस इज मोर देन फाइन. ओके, तो वो बस चली गई, आप उस बस से चले गए. आपका जहाँ कॉन्फ्रेंस था, जहाँ आपका प्रोग्राम था, वो बैठा, आपने वहां उसे अटेंड किया, एंजॉय किया. आफ्टर 2 hours यू आर ट्रैवलिंग बाय द सेम बस, यू स्टार्टेड ऑफ, और फिर उल्टे डायरेक्शन में आप वही स्पॉट, उसी स्पॉट पे आ गए उल्टे डायरेक्शन में. फिर एक बार पानी बह रहा है, अभी क्या किया, फिर एक बार क्लीनर उतरा और क्लीनर ने उतरने के बाद पानी की गहराई नाप ली और गहराई नाप के फिर बस वाले को इशारा किया, चल ज्यादा गहरा नहीं है पानी, तू निकल, आजा फिर. एंड देन यू again cross the river and get started going to the your your residence. आपने फिर आप क्लीनर को पूछते हो कि भाई हम लोग भी कब ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम महाराष्ट्र में होते हैं, आप ये ट्रैवलिंग कर रहे हो, अभी 2 घंटे पहले तो हमने नदी क्रॉस किया था, 2 घंटे में वापस क्या हुआ कि आपको नदी फिर एक बार देखनी पड़ी, नदी की गहराई देखनी पड़ी. देन ही सेड, द क्लीनर सेज दैट अगर इन 2 घंटे में पहाड़ की गहराई पे अगर उस 2 घंटे के लिए बारिश होती है, तो 2 घंटे की बारिश का फोर्स इतना बड़ा पानी में आता है, इतना बड़ा फोर्स पानी में आता है. तो उस फोर्स की वजह से ये जो नदी आपने देखी ना, ऐसे हाफ मीटर गहरी, वो कम से कम 2.5 मीटर गहरी हो सकती है. कम से कम 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर कैन बी द depth of that particular stream, which was half a meter 2 hours back. That's the force. अब आप बोलोगे ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो महाराष्ट्र में नहीं होता. इमेजिन वन थिंग
Sahyadri mountain is an old mountain. Okay, Himalayan mountain looks bigger and longer, taller, but Himalayan mountain is not an old mountain, it's a young mountain. So उसकी वजह से वहाँ अलग अलग लेवल पे वहाँ उस माउंटेन में बदलाव होते रहता है. हिमालयन इज अ फोल्डेड माउंटेन. ओके, वो लॉरेशिया गोंडवाना, फिर वहाँ का एरिया वहाँ जाके फंस गया, फिर वो टकराया टिबेटन प्लेटो को, उसके बाद जो माउंटेन हो गया, ओके, वो डिपॉजिटिंग हो गया, डिपॉजिटिंग का फोल्ड ऊपर आ गया, फोल्ड का माउंटेन, ये सब आपको पता है. वो कम से कम 1 लाख ईयर का कुछ तो ये पूरा प्रोसेस है. बट हिमालयन माउंटेन आज भी चेंजेस अपने में करता है बिकॉज इट्स अ यंग माउंटेन. ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. नो, अगर सपोज कोई नदी है, उस नदी पे अगर आपने अगर ब्रिज बांधा, ओके, नदी पे ब्रिज बांधने के बाद आपको पता चलेगा अगले 2 साल में उस नदी ने पूरा अपना बहाव बदल दिया. रिवर हैज चेंज्ड इट्स कोर्स एंटायरली. मतलब नदी पे आपने पुल तो बांधा, नदी ने अपना बहाव बदल दिया. नदी अभी अलग ही डायरेक्शन में बहती है. बांधा हुआ पुल क्या करने का अभी? ओके, I mean, it has to be there, but then again, you have to go to the new construction of bridge. Okay, so these things keep on happening. Because of that, the nature is completely difficult to manage over there. मैं आपको एक और अभी अभी आते हैं वहां की डेमोग्राफी पे. जैसे मैंने बताया कि वहाँ डाइवर्सिटी बहुत है. आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक rediff.com पे. It was regarding Rinzing Dengzokpa. Rinzing Dengzokpa. Rinzing Dengzokpa is the son of veteran actor Danny Dengzokpa. अब डैनी किसको पता है, आई डोंट नो. पर अगर आपके लिए अगर डैनी का अगर नाम लूँ तो डैनी के मेमोरेबल मूवीज आज के जमाने में कौन से थे, तो बेबी या फिर शबाना में जो उनका जो सुप्रीम बॉस था फिरोज नाम का, या फिर डैनी वाज द वन हु वाज द मेन विलन इन बैंग बैंग मूवी ऑफ ऋतिक रोशन. सो दैट हैज टू बी टोल्ड अबाउट डैनी वेरी सैडली. तो ऐसे डैनी का, डैनी इज अ स्टार, डैनी वाज अ स्टार, ओके, इन सीनियर एक्टर्स. सो डैनी का जो बेटा है रिंगजिंग डैंगजोप्पा, ही इज कमिंग विथ नो कमिंग इन फिल्म इंडस्ट्री. अब ये दिखता सिक्किम का है, डैनी इज फ्रॉम सिक्किम. अब डैनी सिक्किम का होने के बाद भी डैनी को बोलते हैं नेपाली. एंड डैनी इज सेइंग कि आई फेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ discrimination because of my looks. So I had to work hard and prove myself that I'm worth of this Indian film industry. And that's what Danny says. So Ringzing Dengzokpa has to face the same thing. He looks fabulous, no doubt about that. He looks very handsome. But still, that discrimination has to be faced by him. Okay. और उसके बाद फिर अगर चक दे इंडिया अगर आपने देखा होगा, तो चक दे इंडिया में एक 2 लड़कियां रहती है नॉर्थ ईस्ट की, मेघालय की रहती है. तो लड़कियां जब आती है उस कैंप में, तब वो जो वहाँ जो एक्टर दिखा है जावेद खान, ही इज टेकिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरीवन. और एंड देन ही आस्क्स कि आप कहाँ से आए हो, तो कहती है कि मणिपुर से. तो फिर जावेद खान कहता है कि आइए आइए, मेहमानों का स्वागत है. लड़कियां कहती है मेहमानों का स्वागत, हमें हमारे ही देश में मेहमान क्यों कहा जाता है. वो चुप हो जाता है, ये दो निकल जाती है. Then there was a movie called Mary Kom. Okay, Mary Kom was a terrific movie in that case because it showed Manipur very subtly. मणिपुर के बारे में मैरी कॉम का एक सीन है, 2 सीन्स है इनफैक्ट. एक बार वो सीधा सीधा कहती है आफ्टर शी बिकम्स अ स्टार बॉक्सर, वो कहती है कि मैं मणिपुरी हूँ इसलिए मुझ पे ऐसा इनजस्टिस हो रहा है. आपको क्या पता मणिपुरी होना क्या होता है. दैट्स व्हाट मैरी कॉम हैड सेड. और एक सीन है मैरी कॉम की मूवी में, प्रियंका चोपड़ा, देयर इज अ कंपटीशन, local competition, and there is a boxer, fighter come boxer who is boxing. Okay, तो यहाँ वो बॉक्सर कहता है कि मेरे सामने 15 सेकंड कोई भी टिक के दिखा, 15 सेकंड. ओके, और मैं देखूंगा क्या करना है आपको. ओके, बट आई बेट दैट यू वोंट डू दैट, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन बिफोर मी.
और होता ऐसे है कि शी गोज, नो दिस बॉक्सर इज हिटिंग मैन लाइक एनीथिंग, और ये लड़की है, ये जाती है, उसके साथ शुरू हो जाती है, ये इसको बहुत मारता है, उसको वो भी दो मुक्के मारती है, ओके। और 15 मिनट्स या 15 सेकेंड्स ऐसा कुछ तो भी है, और उसके बाद शी फाइनली कोलैप्सेस, शी इज हेवीली इंजर्ड एंड शी कोलैप्सेस। पर तभी उसमें जो किलर इंस्टिंक्ट होता है वो दिखाई देता है। उसके बाद वो मूवी बहुत आगे निकलती है। उसके बाद फिर उसको, उसकी वो चैंपियन बॉक्सर होती है, उसकी फिर शादी होती है, एंड देन आफ्टर मैरिज व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, उसके उसकी डिलीवरी डेट एकदम नजदीक है, शी इज हैविंग लेबर पेन, तो शी इज ट्रैवलिंग बाय जीप। तो उसको उसकी फैमिली उसको हॉस्पिटल में लेके जा रही है, तब मणिपुर में बहुत बड़े लेवल पे एक वायलेंस हो रहा है, ओके, एंड देर आर राइट्स अक्रॉस मणिपुर। तो उसकी जीप कुछ लोग रुकाते हैं, रुक जाओ, कौन है यहाँ, कौन है यहाँ। तो देखते हैं वो लोग, तो ड्राइवर को बोलते हैं रुक, तो अभी मारेंगे, तो सबको मारेंगे आप लोग। एंड देन दे गो इन द बैक, गो एट द बैक ऑफ द जीप, दे ओपन द डोर एंड दे सी मेरी कॉम। तो उनका जो मुखिया होता है वो उनको कहता है रुक जाओ, इनको कुछ मत करो, दरवाजा बंद करो, सीधे जीप को हॉस्पिटल लेके जाओ। दरवाजा बंद करते हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो मुखिया के लोग पूछते हैं कि साहब ऐसा क्या हुआ, आपने इनको छोड़ा क्यों। तो वो मुखिया बोलता है तुम लोग ने पहचाना ही वो कौन थी, मणिपुर की थी वो, मेरी कॉम थी, मेरी कॉम। 15 मिनट्स आज भी दम है। दैट मीन्स दैट बॉक्सर who was a champion boxer has now turned a dacoit in that Manipur politics. Okay, that's the story. If you want to watch one more part, that is Tango Charlie. It's a very serious movie in Tango Charlie, because Tango Charlie में होता है ऐसा कि मणिपुर, मतलब बॉबी देओल enters that northeastern part. He enters in मणिपुर, I guess, and फिर वो उस पहला पहला ही दिन रहता है, एंड देन these people are having a lot of jokes. तो वो पूछता है कि why are you all cracking the vulgar jokes, sexual jokes you are cracking, why. Then they said we don't have any other option, we just for passing some time we are cracking the jokes. Bobby Deol is a soldier and all others are soldiers who are cracking the jokes. Then Bobby Deol said there are many things to crack a joke, to speak. Why only sex? There are many things to speak. Then वो सोल्जर्स पूछते हैं मतलब क्या कहना चाहते हो, तो बॉबी देओल सेज ये ये वादियां देखो, ये नज़ारे देखो कितने ब्यूटीफुल है, व्हाई डोंट यू स्पीक ऑन दैट, व्हाई जस्ट यू कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट सेक्स। एंड अचानक से वहां एक बहुत बड़ा अटैक होता है, एंड विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स वी, बॉबी देओल एंड अजय देवगन, go through a very hardening experience, very terrible experience. And after that experience is over, when Bobby Deol is stunned, at that time Ajay Devgan says, "ये है इन वादियों का असली चेहरा." And that's why we crack the jokes, because we just want to pass the time. Okay, ऐसा है. Now, for example, we had one more movie, beautiful movie called called Pink. Okay, पिंक में क्या था, याद है अगर आपको, तो पिंक में द गर्ल, 3 गर्ल्स आर देयर, और वो लड़की को पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, ओके, एंड देन शी सेज आई एम फ्रॉम मेघालय। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर question. She's from Meghalaya, or she's from she's from any part. So then Amitabh Bachchan says none of the boys was asking about their own background. Only this girl was asked about their background, and she will say what is the pain behind that. And then she says, since I'm from Meghalaya, the people's look at me or people's eyes at me are very different. मतलब उनको लगता है कि मेघालय की लड़कियां जो है वो कैरेक्टर से खराब होती है, तो हमको हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि हम सही लड़कियां हैं. That happens. Okay, that's what happens, and that is the reason why you generally have you generally have the misconception about this. Okay, I'm just taking a break of 5 minutes. Okay, I'm resuming again
Now my talking is completed. I'm coming out with a presentation. Okay, just stay tuned. Go in, don't go anywhere. I'm just taking a break of 5 minutes. Okay, welcome back.
Okay, just a minute, everyone. I'm just opening this before you. Okay, now sharing the screen before you. Okay, now you can have this presentation once the lecture is over. Okay. Okay. So the presentation is about Northeast India and Southeast Asia challenges before the Indian security. So जैसे मैंने कहा, we'll have to take the entire foreign policy into consideration, international relations into consideration. Northeast India is not like I can keep on speaking and then I'll go on for 2 hours and the matter will be over. ये एक पूरा एक अध्याय है, मतलब लोग जिंदगी बिताते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया समझने में, तो वो 2 घंटे में आपके सामने मैं खड़ा करूंगा, आई मीन दैट इज नॉट पॉसिबल. सो ऑन लार्जर फ्रंट आई हैव just no precisely mention some problems related to Northeast India. Okay, I'll go ahead. Okay, so this is just, we have seen this map of Northeast India. Okay, so भूटान है उसके ऊपर. ये इंपॉर्टेंट ऐसा है कि जो मैंने आपको दिखाया था, एक न्यू जलपाईगुड़ी का एरिया मैंने आपको दिखाया था, दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी का मैंने बताया ना आपको, सियालडा एंड ऑल. ओके, वहां से फिर हम लोग दार्जिलिंग जाते हैं, तो दैट पर्टिकुलर स्मॉलर पार्ट, very small part, is called as chicken's neck. Okay, I'll show you what is chicken's neck. Okay, just a minute, I'll show you what is chicken's neck. Okay, now उस chicken's neck में या ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, a very small part between Northeast India and India is chicken's neck. Okay, so I'll show you why this part is so important for us. देखो यहाँ पता चलता है हमको. ओके, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं. मैं आपको, अगर मैं आपको ये और एक बार अगर मैप दिखाऊं, ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. नाउ यू हैव भूटान. ओके, यू नो द एरिया ऑफ भूटान. सो अरुणाचल और सिक्किम के बीच में भूटान है. सो भूटान जो देश है उसको बॉर्डर है असम का और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का. सो असम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल. ओके, सॉरी, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश हैव बॉर्डर विद भूटान. ओके, नाउ व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज भूटान और सिक्किम के बीच में डोकलाम है, डोकलाम एरिया है. तो बहुत लोगों को लगता है इंटरनेशनल मैप में कि भूटान और सिक्किम के बीच में कोई है, मतलब दोनों के बॉर्डर्स एक दूसरे को है, पर फिर भी सिक्किम और भूटान के एकदम बीच में, मतलब लिटरली फ्यू किलोमीटर्स एक विड्थ है दोनों में, जगह है दोनों में, उसे डोकलाम कहते हैं. चाइना को वहां तक रास्ता बनाना था. चाइना वांटेड टू मेक रोड अप टू डोकलाम. ओके, सो दैट कुड हैव बीन अ डायरेक्ट एंट्री ऑफ चाइना बिटवीन सिक्किम एंड भूटान. ओके, एंड हमारा जो सिक्किम से लेके भूटान में एंट्री मारने का जो पॉइंट है वो शायद अफेक्ट हो जाता. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू सी द चिकन स्नैक, the chicken snake could have been affected, and because of that it was not in our policy and interest to allow China to construct the Bhutan, to construct that Doklam road. Okay, now I'm going back.
So this is the sensitivity of this area. Okay, so this is northeast. Okay, now problems क्या है मैं जैसे बताऊं मैं, genesis of conflict, insurgent groups कौन कौन से हैं, changing patterns of the groups, नई insurgency है लास्ट के 20 साल में जो हुआ है, then we have development of Southeast Asia and possible solutions. We are here to understand the problem, not provide any solution. Sometimes understanding problem creates some healing for the problem. Okay, at least some person understands our problem. That's a good feeling. But then we go, keep on going for solution. Sometimes the people who pretend to have solution never accept the problem. Okay. Okay. स्टेट वाइज रिव्यू देखते हैं पहले. मेघालय, ये है गारो खासी जयंती आपको दिखता है. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, और उसके ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है आसाम से जा रही है. ओके, 1972 को स्टेटहुड मिला. ओके, और HALC फॉर्म हुआ था टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल था. और हिली एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल ये था. ओके, ट्राइबल था, ट्राइबल ग्रुप था. ट्राइबल नॉन ट्राइबल फाइट्स जो थे इंटेंसिफाई हो गए 1980s में, और यहाँ से एक इंसर्जेंसी आ गई. उसके बाद फिर हिली एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक स्प्लिट आ गया. ओके, उसे हाइनीव ट्रैप कहते हैं. गारो खासी जयंतिया, भोई वॉर एक्सेट्रा. उसके बाद फिर HNLC हो गया, और गारोस उन्होंने फॉर्म किया ANVC. ये अभी की बात नहीं है, करंट अफेयर की बात नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. स्ट्रॉन्ग एजिटेशंस हुए थे 94 के इलेक्शंस में, क्योंकि फॉरेनर्स को वहां से रिमूव करना था. फॉरेनर्स कौन है? जो बांग्लादेशी है, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मेघालय में भी कुछ लोग हैं, बांग्लादेश के लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था. ओके, उसके बाद फिर पोलराइजेशन हुआ था गारो खासी जैन नॉन ट्राइबल्स में, पोलराइजेशन हुआ था. ओके, और आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था गारोस के बीच में. एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट तो था ही, अनएम्प्लॉयमेंट था, करप्शन था. एंड देन नेशनल लिबरेशन काउंसिल जो था, हेनिव ट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, okay, that was anti-Garo and want a separate Khasi land. So again, separate statehood. Close ally of national NSCN. I don't know the full form of this. NSCN आज भी एक वहां की एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. इन्वॉल्व फेक करेंसी एंड एक्सटॉर्शन. उसके बाद अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल शुरू हुआ, सेपरेट अचिक लैंड के लिए शुरू हुआ. इन्वॉल्व ड्रग ट्रैफिकिंग, working relations with NDFB and ULFA, and currently helping ULFA to relocate in Garo Hills. आगे जाते हैं त्रिपुरा में. त्रिपुरा स्टेट कैपिटल इसकी अगरतला. इतना ये हिली एरिया है नहीं, बिल्कुल नहीं है फिलहाल. ओके, कम्स नो, इट्स एडजंक्ट विद द प्लेन पार्ट ऑफ बांग्लादेश. ओके, 15th of October 49 में आया, ये यूनियन टेरिटरी बनी, और 56 में, और स्टेट बना इसका 72 में. जैसे मैंने कहा, बंगाली रिफ्यूजीज आते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, बहुत बड़े लेवल पे आए. नॉट टू सी देम just from Hindu Muslim point of view. There are many Hindu refugees also in from East Pakistan. हिंदू रेफ्यूजीज इसलिए है कि वहाँ माइनॉरिटीज को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है. दैट्स द रीजन व्हाई देयर आर मेनी हिंदू रेफ्यूजीज कम फ्रॉम बांग्लादेश टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके, उसके बाद डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो गया. ओके, मतलब देखो, फिर 95% जो थे इंडिजिनस थे 31 के सेंसस में, वो 31% पे आ गए 1991 में. एंड बिकॉज ऑफ दैट सीरियस डिसकंटेंट अमंग द ट्राइबल्स. यहाँ भी एक इंसर्जेंसी हुई 1970s में. ओके, और अमर बंगाली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन निकला था. ओके, उसके बाद फिर
जो मेन टीएनवी करके उनकी जो एक आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ओके, दे गिव अप आर्म्स एंड न्यू मिलिटेंट आउटफिट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर दैट. ओके, अलग अलग देखो, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फोर्स ऑफ त्रिपुरा, ओके, उसके बाद बोरोक नेशनल काउंसिल ऑफ त्रिपुरा, अलग अलग है. यू कैन अंडरस्टैंड, एक छोटा सा देश था, प्रदेश था त्रिपुरा, वहां से तीन चार आ गए. असम से भी देखो कि मेघालय से देखो, मेघालय से तीन चार इंसर्जेंट ग्रुप्स आ गए. सो एनॉर्मस स्प्रेड ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज इन लास्ट couple of years. Primary targets are civilians, SF, security forces personnel, and secondary extortion, abduction, and political machinery. असम ये सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का. ऑलमोस्ट every state has border with Assam, including Bangladesh and West Bengal also. Okay. Okay. इलीगल माइग्रेशन होता रहा. लोकल डेमोग्राफी बिगड़ने लगी. 1979 में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू एंड ऑल आसाम जी आई डोंट नो बट गण परिषद, ओके, गण सभा परिषद launched a massive movement for the detection of migrants. ये हुआ था. Agitation took violent turn. Formation of ULFA, United Liberation Front of Assam, by Paresh Barua was started. इसके बाद मैंने जैसे बात आया था कि इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट आया था, उसके बाद उन्होंने कहा था असम एकॉर्ड करेंगे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ. उल्फा सॉवरेन सोशलिस्ट असम थ्रू एन आर्म्ड स्ट्रगल, ये उनका कहना था. 1991 में ऑपरेशन बजरंग इनके खिलाफ हुआ था. ओके, 92 में 4000 उल्फा कैडर लेट डाउन देयर आर्म्स. ये उल्फा के लिए था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन था. अब अभी आता है बोडो लैंड. बोडो इज अ लैंग्वेज. बोडो इज बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बोडो became the one of the languages of 8th schedule. Okay, so 1967 to 80. Okay, ये एक मोमेंट था, एबीएसयू था. उसके बाद फिर इन लोगों को, बोडो लैंड को सेपरेट, बोडो लोगों को सेपरेट लैंड चाहिए था एंड द नेम ऑफ लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, बोडो कल्चर. सो दे वांटेड सेपरेट स्टेट लाइक बोडोलैंड. सो उल्फा को एक अलग आसाम चाहिए, बोडोलैंड को एक अलग स्टेट चाहिए असम का, नागालैंड को महानागालैंड चाहिए. और ये इतने दूसरे में इनकी खुद की कंपटीशन है, इतनी खुद की कंपटीशन है, ये दोनों का भी एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाते. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव फाइट विद ईच अदर, और उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस का काम थोड़ा हल्का हो जाता है. ओके ओके. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बोडो लीडर्स के बीच में एक अकॉर्ड हुआ और फॉर्मेशन हुआ बीएसी का. आई गो अहेड. अभी उल्फा, अगेंस्ट उल्फा द असम गवर्नमेंट हैज वर्कड रियली वेरी हार्ड. ओके, असम गवर्नमेंट हैज वर्कड रियली वेरी हार्ड. बट क्योंकि स्पेशली व्हेन तरुण गोगोई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, उनका काम बहुत अच्छा था उसके खिलाफ, ऐसा कहा जाता है. सो बट स्टिल नॉट अ वीक ग्रुप. Concentration of soft targets and smuggling, problem of illegal immigration at its worst stage. Bodo outfits are interested in a dialogue and peace. Some cadres of DHD ready to lay down arms. Overall situation far from normal. Groups like UPDS and BLT have ended ceasefire. Yeah, अलग-अलग groups है. You don't need to put everyone's name, but you understand the situation. It's always a volatile situation. Okay, go ahead. Manipur. Okay, Imphal is the capital है. Manipur, you all know that that area of that famous battle of Imphal by the Indian National Army. Okay, you all know Nagaland, Manipur. They won the Brahmadesh. फिर इम्फाल का एक बहुत बड़ा बैटल था. ओके, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा. एक बहुत वॉलेटाइल स्टेट है. इंडियन यूनियन में 49 को मर्ज हुआ.
and declared as a full state in 1972. This delay increased the feeling of alienation, causing discontent. United Liberation Front, National Liberation Front was formed on 24th of November 1964 to achieve sovereign and socialist Manipur. Formation of revolutionary government of Manipur. In 1968, Sudhir Kumar, ओके इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का. एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्ट पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के समय, वो सिलहट डिस्ट्रिक्ट उनका हेडक्वार्टर बना. ओके, पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1978 में बनी, विश्वेश्वर ने बनाई उसको. एंड चाइनीज ट्रेन दीज इंसर्जेंट्स. ओके, बाकी सारी 1977-80 में इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी. टू मेनी इंसर्जेंट्स इन स्मॉल एरिया, ये तो बर्बादी हो गए पूरे. उसके बाद रीगन ऑफ टेरर इन वैली, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में लाया गया. मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो फॉर्मेशन है वो 1959 में हुआ था. और पहली स्टेट इमरजेंसी ही मणिपुर में लगाई गई. ओके, सितंबर में उसे वापस लगाया गया. पहली स्टेट इमरजेंसी मणिपुर में लगाई गई. स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंशियल रूल. सो इन मणिपुर हैज सो फार around about 9 times presidential rule. So it's the state with highest amount of presidential rule. Remember, it's not Kashmir, neither it is Punjab, it's Manipur. Okay. और कैसे होता है? Why do we have Armed Forces Special Power Act in areas like Manipur? पुलिस वाले हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस है, BSF है, या फिर अपने अपने आर्मी है, उनको उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, as in Indian Constitution and also in different acts like IPC and CRPC, अगर किसी एक्यूज को हमने पकड़ा तो एक्यूज को पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ता है. देन once you have you're called, so he's not accused, he's suspect, so he's a suspect. आपको लग रहा है उसने कोई क्राइम किया हुआ है, you catch him, you take him to the senior, you take him to the nearest magistrate. ओके, और उसके बाद फिर आप उसका कस्टडी मांगते हो. फाइन, दैट इज द ये यही यहाँ की रीत है. बट इन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सच क्लॉज इज नॉट मेंशन्ड. सच क्लॉज डजंट परमिट दैट सस्पेक्ट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. अब ये लोग कहते हैं कि उसकी वजह से पुलिस की तो चांदी है. पकड़ा किसी को तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके मत जाओ, पकड़ा किसी को तो फिर उसको रख दो अपने पास, मैजिस्ट्रेट के पास लेके गई नहीं तो फिर उसका कस्टडी मांगा ही नहीं, वगैरह वगैरह पुलिस के बारे में बोला जाता है. बट द फैक्ट इज दैट इन मुंबई अगर कुछ होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो बहुत जगह मिलेंगे आपको. बैंड्रा में मिलेगा, थाने में मिल सकता है, आपको मिल सकता है. पर अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर नियरेस्ट अगर ऐसा कोई सेटअप अगर आपको देखना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, you may have to travel for 2 days by road. You may have to travel for 2 days by road. That's the distance. Distance is not that much, but area is so hilly and difficult. The nearest magistrate is not one for 24 hours driving away from you. Got it? So इसकी वजह से वहाँ ये कोई क्लॉज है नहीं. तो पुलिस एंड BSF, CRPF and even army is accused of violating fundamental rights of the people. उसके बाद फिर और एक चीज है कि मॉब को कैसे हैंडल करना है. सो these are the things which are where armed forces special under armed forces special power act, the forces are given separate freedoms. Okay, so they can manage against the armed attacks, collective armed attacks. So इसकी वजह से सो वही बात है. मतलब पहला ये जो आया पहले नॉर्थ ईस्ट में आया, उसके बाद वो कश्मीर में गया. इट्स नॉट दैट इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. ओके, या सम डिसएडवांटेज इज टेकन, बट इट इज नॉट रॉन्ग. ओके, 2 years of massive manhunt resulted in sharp decline of bloodshed. 90s में फिर एक बार इंसर्जेंट ग्रुप्स आ गए, फिर एक आइडियोलॉजिकल फेज था इनका. पैन मंगोलाइड मूवमेंट. मंगोलाइड का मतलब है वो जो अलग से दिखते हैं ना ये लोग, मंगोलाइड.
Okay, हम लोग जिनको चाइनीज, जापानीज या फिर नेपाली बोलते हैं ना, that's Mongolide movement. Assertion of separate identity, revival, okay, of religion and script, etc. एंटी आउटसाइड कैंपेन तो इनका था ही, और फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक आउटफिट्स भी हुए थे यहाँ. और फिर हिल डिस्ट्रिक्ट था, फियर्स एथनिक क्लैशेस बिटवीन नागा, कुकी एंड कुकी फाइट्स, पेट्स, एडिशन ऑफ मोर इंसर्जेंट ग्रुप्स इन द स्टेट. नागालैंड को देखो, ओके, कोहिमा इसकी कैपिटल है. Okay, oldest player and performing a pivotal role. Most troubles are result of our ignorance, displacements, and separateness that is fostered. Matlab, I'll tell you, Northeast Indian students, they come to Mumbai University, they come to Pune University, then they're always together. 7 states से आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं वो, so आते हैं एक दूसरे के साथ और ही बैठते हैं वो लोग. Okay, that happens. Now, they are also referred as Northeast Indian students, okay, in class. They are good basically in learning. पर उसके बाद फिर मुंबई में उनमें से बहुत कम रहते हैं. अब मुंबई में आते ही बहुत है, इसके रीजन एक है कि दो फैसिनेशंस मुंबई के लिए उनको रहते हैं. एक तो अपना कोस्टल एरिया, समुद्र उनको बहुत अच्छा लगता है. That's a fascination about Mumbai. And second is Hindi film stars, Bollywood stars. So उनको बहुत बढ़िया लगते हैं. That's the reason why they are fond of Mumbai. But ऐसा होता है कि अलग है, मतलब वहाँ मणिपुर हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, असम हो, लॉ एंड ऑर्डर के इतने प्रॉब्लम्स है कि जब ये स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जब यहाँ आते हैं, एट दैट टाइम वहाँ के उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि तू जा और तू आ मत. Okay, and then they try going to other parts of India after learning here. So the most important problem they have is the differentiation or discrimination that they are facing from the average Indian people. अभी misplaced arrogance है हमारा, separateness है. I mean, there is no need to call them Nepali or Chinese or Japanese. हम लोग उनके बारे में हम लोग मतलब jokes बनाते रहते हैं. That's really not good. I mean, these are the people from our state only, and what is wrong? I mean, दिखने को तो सब लोग ही मस्त रहते हैं. I haven't seen bad looking people among them. They are really good looking, but they are understood from a, a different Mongolide features. Okay, they are known with Mongolide features. So there is no need to be so arrogant about them. Okay. Okay. Now, was Nagaland an interesting part of India's political cultural environment? Christianity spread हुई थी. ब्रॉन्सन नामजांग जो था उसके साथ, उसके बाद रेवरेंड ब्रॉन्सन था उसका नाम. रेवरेंड क्लर्क बैप्टिजाइज्ड 9 AOs in 1872, and Baptists never looked back. Nagaland has got maximum number of population who are Christians as far as state is ratio is concerned. In fact, मिजोरम में 93% कैथलिक्स हैं, 93%, और मिजोरम में almost 89 to 90% ट्राइबल्स भी है. So you can understand the tribal population and Catholic population. You can understand. So tribals are the people who are targeted by the Catholic people. Okay. So Chief Administrative Center was established in Kohima. Naga Club था, important chiefs थे Naga Club के. British authorities educated Nagas and people to return from from World War I. Okay. I'll just come in a minute because the internet connection seems to be unstable. I'll just in a minute. Okay.
Commission visited Kohima 1920. Return of the ऐसा कहा जाता है that Nagaland participated in World War II because they wanted to have a separate nation. Okay, they were hoping for the liberty. And April 1945, Naga Hills District Tribal Council was formed by Sir Charles. Okay, so Naga Club to Naga National Council बन गया 46 में, and Naga Unification and Freedom बना आगे. Okay, 1950 to 54 में Naga insurgency actually started. Fizo started an underground government and an army. December 1963 में नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ. ओके, जो था he shifted to UK and was active through Naga Vigil. Naga rebels started training under 5 में इंदिरा गांधी के साथ, and MNC dissolved and NSCN नाम का एक ग्रुप फॉर्म किया गया. ओके, नाउ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN. ना आज के जमाने में NSCN का और भी एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड खापलांग ग्रुप. ओके, उसमें वर्टिकल स्प्लिट आ गया, NSCN IM and NSCN Khaplang. Now today NSCN Khaplang is called a bit extremist and IM is called a bit moderate group. Now India और NSCN Khaplang का ही आपस में समझौता हुआ था, मतलब with the help of Myanmar government, NSCN Khaplang ग्रुप और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ था. एंड आफ्टर दैट ओनली IM ग्रुप जो था, आफ्टर उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ समझौता करने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था पहला म्यांमार में, आपने उरी नाम का मूवी अगर देखा रहेगा, तो उरी मूवी में सर्जिकल स्ट्राइक जो दिखाया गया था, ओके, वो खापलांग ग्रुप के खिलाफ किया गया था. ओके, जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक था इन म्यांमार. सो IM फॉर्म्ड SDU FS EHR, okay, ceasefire was 1979 में से, and IM versus KIF, they keep on fighting with each other. Okay, so नॉर्थ ईस्ट के मेजर अगर ग्रुप्स अगर आपने देखे तो कौन कौन से ग्रुप कब फाउंड हुए देखो. I mean, you don't need to remember everything, but you need to understand that the Northeast India is completely having a lot of internal security trouble. Okay, and there only you can understand कि what is the issue. So ये presentation आप बाद में पढ़ लो. Okay, असम में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है. I mean, it's very serious, it's very damn serious rather. Okay, heartening also. So United Liberation Front of Assam, Bodo Security, National Socialist Council of Nagaland. Okay, उसके बाद फिर People's Liberation Army, उसके बाद कुकी नेशनल मूवमेंट, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, मच सबड्यूड नाउ, ये सब आता है. ओके, ये इनके अलग अलग ग्रुप्स है. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट they don't operate in one state, they keep on operating from one state to the other, one state to the other. तो इनके बहुत झगड़े हैं. I mean, they have different dresses, they have different kind of attires, okay, and they know each other, okay, from the uniforms and all, and they keep on fighting. Okay, and because of that they themselves do not have unanimity over, because नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर अलग करने गए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा पार्ट किसको मिलेगा, इसके बारे में अभी कोई
दो राय है, मतलब एक राय है नहीं। दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज समहाउ ट्राइंग टू सप्रेस इंडियन सिक्योरिटी को यहाँ से थ्रेट कैसी है। चिकन देखो, now you can understand, you enter from West Bengal to Bhutan, यहाँ से थोड़ा आपको पता चलेगा, this is the part of China took over Tibet and growing China. चाइना तिब्बत को टेक ओवर करने के बाद आपने कुछ भी नहीं किया था, ये फैक्ट है। आउटब्रेक ऑफ नागाज इन चेंज इन ईस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लाइमेट, ये हुआ था। 8 बैचेस ऑफ ट्रेंड इन ईस्ट पाकिस्तान, मिजो एंड मणिपुरीज वर द नेक्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट इन एक्साइल, ये पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए वी एंटर्ड दैट वॉर ऑफ 1971। टू कंसर्न इन 1965, ये हुआ था। थ्रेट टू साइनो-पाक नेक्सस इन साउथ एशिया, ओके, ये होता है। थ्रेट ऑफ साइनो-पाक नेक्सस इन साउथ एशिया, ये हमारे खिलाफ है। एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, चाइना की फॉरेन पॉलिसी, एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन। And China started training camps for the rebels in regions. Nagas joined in 66, others followed soon. बांग्लादेश फॉर्म हुआ और एक अच्छा खासा सेटबैक मिला पाकिस्तान को। रिबल्स लॉस्ट देयर सेफ बेस एंड साइनो पाक टाइज ब्रोक। शिमला अकॉर्ड हुआ और इसकी वजह से पॉलिसी दिखने लगी हमारी, ओके। मिजोरम ने भी एक अकॉर्ड ज्वाइन किया 76 में। डिफीट ऑफ हार्डलाइनर्स इन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हुई थी, ओके, एंड द गोरिल्ला कैंप्स वर शट डाउन, ओके। Rajiv Gandhi had a Mizo accord with those people. Now, for example, मिजोरम का एक प्रेसिडेंट, मिजोरम का एक बंदा था, उसका नाम था लाल डेंगा। Now, Lal Denga was very active since 1971. So since 1971, नहीं, उसके भी पहले, मतलब he gave up guns in 1975, 1976 rather. Or 76 में he gave up guns, but he was a sympathizer of the insurgents, okay, and terrorists. Now what happened? Rajiv Gandhi proposed an election plan to Lal Denga for Mizoram, and then उसके बाद लाल डेंगा ने एक पार्टी फॉर्म किया, उसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड एन एग्रीमेंट, ओके। और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस टुक प्लेस एंड फाइनली लाल डेंगा emerged as the leader of Mizoram, the chief minister of Mizoram. और उसके बाद फिर लाल डेंगा died few decades, I mean in 90s I guess he died, but Mizo National Front is still the party which leads मिजोरम। मतलब मिजोरम में सत्ता में कोई है तो मिजो नेशनल फ्रंट है। सो पोस्ट राजीव इरा में मिलिट्री ऑप्शंस आ गए, एक बार यूनियन गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी जाने के बाद ये फिर एक बार हो जाता है। That's why you need to have a strong union government, okay. Lots of counter insurgency operations हुए, बजरंग जैसी ऑपरेशन हुए, okay. वर्टिकल स्प्लिट आया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड में, ओके। ओके, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन बर्मा, ओके, 90s में है। IS has started supporting northeast insurgents, arms smuggling from Southeast Asian black markets, training camps relocated in 3Bs, ओके। और उसके बाद फिर फंड रेजिंग हुआ था, एक्सेसिव अटैक्स हुए थे सॉफ्ट टारगेट्स पे, अर्बन टेररिज्म उसको कहा गया था क्योंकि अर्बन एरियाज पे हुए थे, और फियर्स एथनिक क्लैशेस हुए। So you can definitely understand that infrastructure is required, but it is difficult also. But at least when you try to bring infrastructure, people are engaged in constructive activities instead of terrorism, okay. India's security requires that no foreign power has a permanent interest in Myanmar, Burma. Timeline है बर्मा की, ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म है, फिर मिलिट्री कू है, मिलिट्री लॉन्च्ड फियर्स अटैक्स है। वी हैव अ
good relations with Burma. मतलब for example, there is a lady called Aung San Suu Kyi in Burma. She was jailed for so many years, and Aung San Suu Kyi during her young age had demanded uh, help from India. पर हमारा ये कहना था कि we will be helping you although we are a largest democracy in the world, पर हमने ये भी कहा था कि largest democracy होने के बाद लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बाद हम लोग का आंग सान स्यू की को सिर्फ मॉरल सपोर्ट था, बिकॉज आंग सान स्यू की को सपोर्ट देके वहां की जो म्यांमार की जो गवर्नमेंट थी जिन्होंने उसको अंदर जेल में डाला था उसको हम दुखाना नहीं चाहते थे. सो अगर हम आंग सान स्यू की को सपोर्ट करने के साथ साथ अगर उस गवर्नमेंट को अगर हम दुखाते हैं, उसको हर्ट करते हैं, सो आवर fight against northeast terrorism goes down. And remember, Myanmar government had done a good job with the Indian government to stop the drug peddling, to stop the drug trafficking, and even human trafficking, and also the terrorist creation. Okay, so we always had maintained good relations with Myanmar. Now, Aung San Suu Kyi came in power. She also knows that national interest of India, national interest of Burma is definitely not in favor of terrorism. So even she maintained good relations with the Indian government. Okay, after coming to power. अभी उनका भी अपना अपना कुछ है. शी इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रोशियस इन हर एडमिनिस्ट्रेशन. फिर भी हम उनके साथ एक ठीक से कदम मिलाए चलते हैं. दैट्स हाउ आवर फॉरेन पॉलिसी शुड बी. सो फॉरेन पॉलिसी का मतलब जैसे मैंने कहा था आपको कि इट इज बेसिकली व्हाट इट इज बेसिकली द it is basically the combination of it's basically the framework of national interest and your relations with other nations in the framework of national interest. And national interest kya hai? The national interest is basically your financial development, your economic development, your national security and your sovereignty. So to maintain security, sovereignty and economic growth, that is national interest in combination. Whatever relations you have with other nations, that's called foreign policy. So as far as Burma is concerned, our relations with Burma are especially from the security point of view. Okay, so communists launched fierce attacks, rise of other ethnic groups. Okay, हमारे रेबल्स ने बर्मा में शेल्टर लिया था. उसमें आपको नेशनल NSCN के मिलेंगे आपको. ओके, IM तो म्यांमार से निकल चुकी है. उल्फा हैज फ्यू बेसिस क्लोज टू द बॉर्डर. MPLF जो है वो और अदर ग्रुप्स है based around other parts. Okay, virtually no government in western part वो बर्मा में हुआ था. And sheltered rebels after 71. Okay, safe training मिलता था उनको, पर now these things are coming down. ओके, बांग्लादेश के बारे में इनका लगाव ज्यादा है क्योंकि इस्लामिक ग्रुप्स है यहाँ. ट्रेनिंग बेसिस ऑफ वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप्स. साउथ ईस्ट एशियन माफियाज भी यहाँ रहते हैं. ट्रांजिट पॉइंट फॉर ऑल स्मगलर्स एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है बांग्लादेश की वजह से. एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी है यहाँ, तो उसकी वजह से यहाँ से खुला हेल्प एक दूसरे को मिल जाता है. ओके, ओके, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं इसको. टू लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स, थाईलैंड एंड बर्मा. ओके, 70% share in amphetamine production. Average opium production 1700 tons a year. Average heroin देखो कितना था? 220 tons a year. Okay, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां से करके ये सब ट्रैफिकिंग होता है. ओके, just see this. This information is good, but it's too deep. Okay,
And since your paper of internal security is based on current affairs, तो उसकी वजह से आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, पर एटलीस्ट इफ यू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन यू विल एबल टू रीड द न्यूज़पेपर्स वेल. ये तो का इशू ही पता नहीं तो न्यूज़पेपर में क्या रीड करोगे. दैट्स द पार्ट. ओके. ओके, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है यहाँ. It leads to rise of local consumption. Manipur is worst hit with drug trafficking. Involvement of officials in illicit trade. Ethnic separatists in the region are taking taking protection of drug mafias as quick way to raise funds. Okay. मतलब ये drug rebel drug lord officialdom nexus, a situation similar to that of Latin America. अगर आपने मूवी देखा है, ये नार्कोस करके एक मूवी था. नार्कोस वाज अ स्टोरी ऑफ पाब्लो एस्कोबार इन कोलंबिया. तो सेम स्टोरी यहाँ भी है. ओके. ओके. proliferation of small arms. This is a comprehensive thing. Okay, comprehensive database in presentation. Okay. It's too big. So efforts to disintegrate Indonesia. अदर डेवलपमेंट्स है, ईस्ट टाइमर है, बंदा आकेक है, उसके बाद फिर पोस्ट बाली बॉम्बिंग सिनारियो है, मशरूम जिहादी आउटफिट्स, ये अलग अलग जगह है. ओके. ओके, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेंथनिंग आसियान विद सार्क. अभी ये भी कहा जाता है कि सार्क की जगह बिम्स्टेक इज इम्पोर्टेंट नाउ फॉर अस. सार्क की कंट्रीज है, उनको सिर्फ पाकिस्तान को निकाल दिया तो, और अफगानिस्तान को, तो बिम्स्टेक आता है. अफगानिस्तान के साथ स्पेशल रिलेशंस रख सकते हैं. बिम्स्टेक यूज्ड टू बी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ओके, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, ऐसा कहा जाता है बिम्स्टेक को. नाउ वी हैव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव because we wanted to keep Pakistan away from it. So we want Bay of Bengal initiative for multilateral, scientific, and technical and economic cooperation. That's BIMSTEC. पहला इसका बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार था, अब वो BIMSTEC अलग बन गया. ओके. तो ऐसे ग्रुप्स हैं BIMSTEC जैसे कि that we can strengthen ASEAN and BIMSTEC. Joint effort चाहिए stop drugs and arms के खिलाफ. ओके. बर्मा एंड बांग्लादेश के खिलाफ हम काम, इंसर्जेंट्स के खिलाफ हम काम कर सकते हैं. ओके. इलीगल इमिग्रेशन हमने बंद करवाया है. ओके, हमने बंद ही करवाया है with persistent efforts from all governments in last 20 years. We also completed Bangladesh India fencing, and we also come to the permanent border. Okay, 100th constitution amendment was regarding the permanent border of Indo Bangladesh. Okay, so we have to deal with terrorism and not insurgency. Loki's policy, now it has become Actis policy. Consistent policy for economic growth. Okay, exclusive security oriented solution is impossible. Okay, police should have counterinsurgency capabilities. Okay, democratic platform to express anger and discontent. Demystification of Northeast. Domestic tourism बढ़ना चाहिए. Emotional integration and social sector and equal partnership in the union होनी ही चाहिए. Okay, ये bibliography है. Thank you so much. So I stop sharing. If you have any doubt, you are free to ask.
Okay, फिर bye everyone. Okay, the presentation will be given to you via Deepak sir. Okay, good night.